Welcome students, I am Dr. Amima Shweb, Assistant Professor, Axis Institute of Planning and Management in the Department of Business Administration. We have been discussing on various topics of marketing analytics, in which we have already discussed about what exactly marketing analytics is, how it is being used for generating more or better decision making, how marketing analytics is used in better decision making even by the marketeers or by the top management. Now in this session we would be discussing about how to determine optimal bundle pricing. This is the continuation of the previous session in which we discussed about what exactly bundling is. We have usually seen ki at times when the products, instead of being sold alone, instead of being sold single handedly, they are being sold together as a bundle. For instance, when you purchase some laptops or computers, you get some things extra, as in sometimes you get the hard disk, you get the mouse. So these, when these products are bundled together, what happens, even in the grocery items, it is usually during the time of off season, this is the way to push the products more, and in this way the even the customers purchase more of the products. Then why we need to determine the optimal bundle pricing? Reason being, we need to find out exactly how much we should charge from the customers, so that we are able to even generate revenues as well as maximize our profits. So for maximizing profit, which is the ultimate aim of any marketeer or the business firms or business concern, we need to find out the optimal bundle pricing too. And we need to remember that while discussing the optimal bundle pricing or understanding the concept of optimal bundle pricing, the concept of consumer surplus was considered. Reason being, that was a kind of assumption that was taken to determine and even understand the concept of bundle pricing. Now what is exactly consumer surplus? I will just have a quick review and you will be able to recall. It is a measure of the welfare that the people gain from consumer goods and services. If we understand in a layman language, it is nothing but a kind of good deal that an individual gets. What happens, we are wanting to we want to go for instance any trip, right, and we plan to go book a travel ticket of about 1000 bucks, $1000 bucks basically. 1000 bucks में तो कोई भी टिकट नहीं आएगा बाय एयर का, अगर हम जाते हैं तो 1000 bucks, but we end up paying $800. $800, what happens, this difference of $200 is nothing but the consumer surplus. So it is a kind of welfare that people gain from consumer goods and services, and it is, in layman language अगर हम इसको समझे, it's a kind of deal that customers get. It may be defined as the difference between the total amount that consumers are willing to pay and able to pay. There are two words that we need to consider over here, that is willing to pay and are able to pay. We need to consider these two words and understand, because this is हम willing कितना चाह रहे थे and हमने pay कितना किया है. This is what exactly what the consumer surplus is. And when you combine consumer surplus decision making assumption with the power of the evolutionary solver that we have been using in our previous sessions also, in finding out the optimal pricing, in even understanding the demand curve, the power demand curve, the linear demand curve, we have been using various Excel functions. This was also the evolutionary solver that we have already used in our previous session also, and again we will be continuing using the same and understanding the aspect of evolutionary solver, how it is going to help us. In this session, I will be taking the example of a concert of Taylor Swift and Rolling Stone. What exactly it is कि for instance आपको एक concert में जाना है, जो option दिया गया है Taylor Swift का and Rolling Stone का, तो what happens, either people would prefer to go into both the concerts or would not go. As simple, either they buy any combination of these, either they will go in both, either will go in single, or would not go in any. So what exactly we have to do is, we have to understand what is the optimal price and how these people who are organizing concerts are going to generate revenue as well as profits. The people who would be opting for going into this concert have been segmented on the basis of the teenagers,
the college students, the adults and parents. These are basically the 4 segments that are being used in deciding the optimal price. Now, the key to model is to set up a spreadsheet that tells any set prices for each possible combination, how much revenue one can obtain from the sample of segments. यहाँ पे we have to find out from the Excel that any sets of prices for each possible combination, whichever combination we would be using, and how much revenue that would be generated if any of the sample segments chooses to opt for that particular segment or particular concert. The particular segment, the evolutionary solver can be used to find the set of prices for the combination that maximizes the revenue. Please note, we have to understand this कि evolutionary solver हम क्यों use करने जा रहे हैं अपनी Excel sheet में, to just to determine and to find out which possible combination is going to help in generating the maximum revenue. So, it is mentioned it can be used to find the set of prices, what prices that would be charged and would help in eventually generating the maximum revenue from those possible combinations, and to find out how much revenue can be generated from any set of those combination prices, and we would be able to even find out how much revenue it would be generated. Though I have written step by step here in the slides also, as well as in the Excel sheet also. First I will be reading out over here and making you explain what all functions I have used in this Excel sheet to determine the best optimal price, and then we will be going into the Excel sheet. First, what we have to do is we have to enter each trial price for the possible combinations that we have been constantly using. Either you call it a guest price or you call it a trial price. That would help even in understanding this concept. तो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज इन F2 से H2 के कॉलम में वी आर गोइंग टू एंटर द ट्रायल प्राइसेस फॉर ईच ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, देन डिटरमाइन द फर्स्ट कस्टमर्स surplus by computing the value of the product in the combination and subtracting the cost of the product combination. What we are going to do is सबसे पहले हम कस्टमर सरप्लस को पता लगाने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस का अगेन एक इम्पॉर्टेंट रोल आ गया है जो कि हम पहले भी पता लगा चुके हैं कि व्हाट एग्जैक्टली कंज्यूमर सरप्लस इज. इट इज़ नथिंग व्हाट वी आर विलिंग टू पे एंड व्हाट वी आर एबल टू पे. For example, the first customer's consumer surplus for Taylor Swift plus Rolling Stones product combination is computed in the cell B4 and 64. I'll even show you because that would help you in understanding better. अगर हम देखें तो what we have done is हमने सबसे पहले आपको बताया, हम what we did is trial price in F2 and H2. यानी कि अगर हम F2 से H2 के बीच में देखें तो वी हैव टेकन द ट्रायल प्राइसेस. यहाँ पे हमने ट्रायल प्राइसेस लिए थे $10 एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इट एज $20. अगर हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो व्हाट वी गेट इज $20. ये दिस इज what exactly we have taken. यहाँ पे देखना है हमको, we have taken the trial price for the Taylor Swift concert, for the Rolling Stones concert, and when combining Taylor Swift plus Rolling Stone we are charging $20. This is what we have assumed. Then determine the first consumer surplus by computing, and then what we have done in cell G6 with the formula of B4 plus C4. G6 में what we have done is, यहाँ पे what we have done is we have tried to find out जो यहाँ पे formula है इसको हमने combine किया है B4 and 64 करके ताकि हमें पता चल जाए. Then coming to find the surplus of each option by the formula B4 minus F2 for the Taylor Swift and C4 for the Rolling Stones के concert के लिए. Why we have used this dollar sign is just to freeze that column. हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कॉलम को
फ्रीज किया है। जैसे कि आपको बताया हमने, जब डिफरेंट प्राइसेस फॉर ये चार्ज करे, फिर हमने सरप्लस पता लगाया। टेलर स्विफ्ट में था B4, यहाँ पे टीनेजर्स ये कितना हमारा सिंगल सरप्लस निकल रहा था, दैट इज़ यहाँ पे हमने $10 लिया था, हमने उसके बेसिस पे लिया था। वैसे ही हमने टेलर स्विफ्ट के लिए जब माइनस किया तो हमें सरप्लस पता चल गया। फॉर द कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रोलिंग स्टोन्स एज वेल एज यहाँ पे हमारा दिस वन, वी हैव अगेन डन इट, हमने इससे माइनस किया हुआ है। ये कंबाइंड प्राइस है, द कंबाइंड प्राइस इज $20, और यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं वी गेट द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर सरप्लस दैट इज ओवर हेयर। Determine the set of price in which product combination, if any, is purchased. We will put the formula of max to find out each consumer surplus. ये फॉर्मूला हमने कहाँ पे पंच इन किया हुआ है? ये फॉर्मूला हमने F4 से H4 में पंच इन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे F4 से H4 में जब हम ये फॉर्मूला पंच इन करते हैं तो वी यूजुअली गेट दिस। We are trying to find out what exactly the max that we would be getting. This is what जो हमने maximum surplus निकाला है F4 से H4 के बीच में, जब हम इसको पूरा select कर लेंगे, यहाँ पे how you will be putting it, हमने यहाँ पे equal to max लिखेंगे, then parenthesis brackets open, we'll select this. Once we select these cells, we'll get this maximum surplus value. Then in column J we use the match function. What happens, अभी हम आपको साइड बाय साइड दिखाते भी चल रहे हैं। In column J we use the match function combined with if function to determine which combination each segment purchases. Please note, पहले वाले हमने उसमें यूज़ किया मैक्स फंक्शन, अब हम यूज़ करेंगे मैच फंक्शन with an if statement to find out which combination each segment is going to purchase. Use product combination 0 to denote no purchase. What happens, जब हम मैच का फंक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, 0 को बताया है either we have done no purchases, whereas the actual combination is indicated by the integer 1 to 7. अगर हम एक्चुअल में कुछ परचेज करते हैं तो उसके लिए हम 1 से 7 के बीच में कोई भी इंटीजर यूज़ कर लेते हैं। अब हमें यही मैच का फॉर्मूला जब लगाना है अपने एक्सेल में, हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ इट, इफ़ दिस इज़ द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन आर एक्सेल। कहाँ पे यूज़ करेंगे हम? जे कॉलम में यूज़ करने वाले हैं। इफ़ I4 is greater than or equal to 0, match I4 comma F4 is to H4 comma 0 comma 0, that yields that any product combination if any bought by each of the customers. यहाँ पे we have already told जब हम no purchasing कर रहे हैं तो in that case we are going to use 0, and if actual combinations are indicated between 1 is to 7. So this is how basically we go in the Excel. I'll show you this formula also in the Excel how it is used. J column में whether bought or not, see if यहाँ पे ये जो bought है whether purchased or not, यहाँ पे हमने ये formula use कर रखा है। just see in the function bar it is if I4 पे हम जाते हैं maximum surplus greater than equal to 0 match। अब हमने मैच का फॉर्मूला लगाया है, मैच फंक्शन लगाया है, फिर हमने इसको सेलेक्ट किया है एंड देन F4 से पूरा लेकर के एंड देन वील ड्रैग डाउन दिस फॉर्मूला वंस वी आर डन इट एंड वील गेट वेदर इट इज बीइंग परचेज्ड और नॉट, बॉट और नॉट। नाउ कॉपी द फॉर्मूला इफ। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इफ H lookup का, that is horizontal lookup, to compute for each segment the revenue that is generated. यहाँ पे हमें क्या पता लगाना है, नेक्स्ट वाले में हम जो lookup का फॉर्मूला लगाएंगे that is horizontal lookup
and find out the revenue that is generated or not. Now let us see this also in the Excel side by side. रेवेन्यू वाले में सी रेवेन्यू वाले कॉलम में जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इफ J4 सी J4 हमारा क्या था, J4 इज वेदर बॉट और नॉट इक्वल्स टू 0, H लुकअप में हम ये सारी चूज करेंगे, ये दीज आर दी कॉम्बिनेशंस दैट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट। ये जो वैल्यू आपको 180 80 100 की दिख रही है, जब हम एवोल्यूशनरी सॉल्वर यूज़ कर लेते हैं तब ये वैल्यू आती है। ये चेंज हो गई है वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आपको यही दिखेगी जब आप इसको कंप्यूट कर रहे होंगे, यानी कि जब आप अपने फॉर्मूला को लगा रहे होंगे एक्सेल में, तब आप इस वैल्यू से लगाएंगे, दैट इज $10 एंड $20। दिस इज द वैल्यू। ये जब हमने एवोल्यूशनरी सॉल्वर रन किया अपनी एक्सेल शीट में, तो जो वैल्यू चेंज हो गई प्राइस की, जिसके बेसिस जो हमने ये अज्यूम्ड प्राइस लिया था वो ये वैल्यू आ गई है। बट क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाते चलते हैं तो हम इनिशियली ऐसे ही फॉर्मूला लगाते चलते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू कि हमने फिर इसको फ्रीज कर दिया है F1 से लेकर के H2 तक के, (2), दैट इज 2 columns basically we are taking, and when we enter it by closing the brackets we get the value in K1 cell. Compute your total revenue with the formula sum. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू ऑफ द विद द सम K4 is to K7। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू निकल के आ रहा है, ये यहाँ पे हमारा इधर निकल के आ रहा है। ये जो हमारा ऐड हम जब इसको करते हैं K4 is to ये, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू आ रहा है, यू कैन सी इन द फंक्शन बार, जो कि फॉर्मूला मेंशन है, सम K4 is to K7। दिस इज हाउ वी यूजुअली ट्राई टू टेक आउट द रेवेन्यू। नाउ comes to find the product combination that the price combination prices that maximizes revenue, you need to use the evolutionary solver। यहाँ पे अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे evolutionary solver यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारे डेटा में जा करके हमें मिलता है। What exactly evolutionary solver is? Let's have a quick review about it and you will understand it, few columns that are to be considered. Evolutionary solver is used when your target cell and constraints contain non-smooth functions that reference changing cells। अगर नॉन स्मूथ फंक्शंस टारगेट सेल और कंस्ट्रेंट सेल में अगर कहीं भी इफ, काउंट इफ, सम इफ, इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ, एवरेज इफ्स, ABS, मैक्स मिन फंक्शंस में से कोई भी फंक्शंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, then we usually use the evolutionary solver, and this engine probably has the best chance to find out a good solution to your optimization problem, that is to find out what exactly the correct price is or the optimum price is, so that we are able to maximize our revenue. The model makes extensive use of if statement. As already told, this model use extensive use of if statements, so it is a good choice to use a evolutionary solver। तब ये it is very good अगर हमने ifs use किए हैं अपनी किसी भी excel sheet में just to find out any kind of pricing, then in that case we can use evolutionary solver। The target cell over here is to maximize this revenue in cell K1. What we are going to do is we are going to maximize the revenue in the cell K1 by changing the product prices F2 is to H2। जब हम F2 is to H2 में वैल्यू प्राइसिंग चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें जो है जो वैल्यू निकल के आएगी, then we will be able to find out। If when running evolutionary solver a changing cell hits an upper or lower bound, one should relax that these bounds basically helps to push the changing cell outside the range you have specified। Use no constraint basically other than bounds on the changing cell। We do not have to use any constraints other than the bounds on the changing cell। You will even see how these penalties in the target cells are used to enforce such constraints
and even in the option tabs you can increase the time to 3600 seconds, even 60 minutes, and you can move out and your evolutionary solver would not stop and you would get the plenty of time to find out a good solution for the problem. Also what you can do is you can add few zeros to max sub problems and get the maximum feasible solutions. What also Excel solver does is it does not stop when you leave the room, as I have already told you. In the option tab जो ऑप्शंस टैब आता है आपका एवोल्यूशनरी सॉल्वर में, यू कैन चेंज द म्यूटेशन रेट फ्रॉम 0.5 एंड मैक्सिमम विदाउट इम्प्रूवमेंट टू 300 seconds. You can change the values even and to find out exactly which is the best price for that particular. Setting a maximum time without improvement to 5 minutes ensures if solver fails in 5 minutes to improve the current solution, the solver stops. You need to consider this point also. Maximum stop without improvement to 5 minutes. What happens if solver fails to get the solution in 5 minutes? Then it would eventually stop. Hitting the escape key at any time stops the Excel solver. दिस इज़ वॉट हैपन जब आप एक्सेल सॉल्वर में जो ऑप्शंस है उसमें चूज जाते हो तो यू कैन एड दिस, you can change this. Basically these are already over there. You can change this, you can get these numbers whatever you would want in your basically Excel solver. Now I'll show you how basically we'll be using the Excel solver to get the price. Just hold on. हम डेटा पे जाते हैं, यहाँ पे एक्सेल सॉल्वर अवेलेबल होता है. वी यूजुअली सेट द टारगेट सेल. हमें अपना मैक्सिमम रेवेन्यू चेंज करना है. मैक्सिमम रेवेन्यू जब हम चेंज करते हैं हम कंस्ट्रेंट्स सेट करते हैं. कंस्ट्रेंट्स हमारे क्या हैं, यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हमारे प्राइस हैं, हम इनको चेंज करेंगे. यही हमारे इवेंचुअली चेंज हो करके, अगर हम आपको बताएं तो यही चेंज हो करके आए हैं. पहले जैसे कि हमने बताया था, हमने जो गैस प्राइस लिया था वो ये लिया था, और जब हमने ये कंडीशंस डाली कि इट शुड नॉट बी मोर देन इक्वल टू ज़ीरो एंड दूसरी कंडीशंस हमारी ज़ीरो थी, ईदर दे विल सेलेक्ट इट और दे विल नॉट सेलेक्ट इट. वंस वी सेल डू इट, जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारी वैल्यू चेंज होकर के आई थी, यू विल नॉट बिलीव, $10 $20 से चेंज होकर के $100 $80 एंड $100 आई थी. दिस वॉज एग्जैक्टली ऐसे हमारा ऑटोमेटिकली रेवेन्यू चेंज हो गया था. This is how basically we have used. Now this method will automatically determine whether separate prices, mixed bundling or pure bundling is optimal. You can use evolutionary solver to maximize revenue or profit to obtain from the customers. As I have already told you, आपने देखा भी कैसे हमने जब 10 और $20 लिए थे अपने चार्जिंग में, वो कैसे चेंज हो गया ऑटोमेटिकली. एंड हाउ एक्सेल सॉल्वर या एवोल्यूशनरी सॉल्वर इन द एक्सेल शीट हैज़ हेल्प्ड अस इन फाइंडिंग आउट और इम्प्रूविंग द वर्जन ऑफ द प्राइस. आई विल शो यू वंस अगेन इन दिस एक्सेल शीट बेसिकली कि हाउ अभी हमने यहाँ पे जब लिया था, आप देखते हो कि प्राइस चेंज हो गया पूरा का पूरा ऑटोमेटिकली, एंड वी केम अप टू अ लेवल, जो ये हमारे गैस प्राइसेस थे, ये गैस प्राइस थे, ये चेंज हो गए. यहाँ पे जब जब हमने फॉर्मूला लगाया तब तब ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा जो वैल्यू निकल के आया था, दैट चेंज एंड वी वर एबल टू मैक्सिमाइज आर revenue and the optimal price that we should be charging
which was actually $10 that we assumed, we should be charging to $100, $80, and when going for a combination it should be $100, which is far beyond what we assumed. This was basically all about today in the determining the Excel solver and understanding the concept, considering the concept of consumer surplus with regard to. Thank you.